Please watch Cricket Lover with Imran Sarwar. Hi, Cricket Lover Imran Sarwar from Los Angeles, California. Today I'm going to talk about Pakistan, South Africa, and PSL. Pakistan, South Africa, they were almost balanced type of teams. Similarity was there. Pakistan was a little better as far as bowling is concerned, but they had also quick bowler too. But I think Pakistan took home advantage. They prepared some quick wicket for themselves. But the good thing is, when they won the Test match, but when they go back home there to play in South Africa, that's going to be the real test for Pakistan team. And then the ball is going to come on you. They will hop. Pakistan batsmen will be hopping up because when they come, the ball comes up. In Pakistan, they've made liveless cricket, liveless wickets. Nothing was there. Spinners for the spinner. I understand that. But if you put some live in there, if you put some live in the wickets, put some grass, but they didn't do it. But when they go South Africa, they are going to put some grass on it. They're going to they'll give them a rocky wickets. That's where you're going to see the dance of Pakistan batsmen. If they don't dance, they can win down there. But this is what's going to be. That's how Pakistan cricket play. They play cricket in Pakistan, which is very unfortunate. Because whenever they go outside, the other team they have impression, put some grass, and let's see the dance of Pakistan batsmen. And that's what happens. I don't know what to tell you, but I know they won't put the grass even in home series. They need to get the practice on a wicket the way the grass is there. Rocky wicket, put the grass practice in domestic cricket too. Not only when the team comes in tour, but in the domestic cricket they need to prepare these kind of wickets. So Pakistan batsmen, they get into the habit of playing on the rocky wickets and to put some grass in domestic cricket in 2020 in one-day series. That's what Pakistan needs to do, but they don't do it. I just don't understand why don't they do it? Until you do it, you're not going to get the top class players. International cricketers, when you perform in away home, that's the time when you get the recognition in the world. Like he's a top class player. 1-2 won't make a difference. You need to win the game. In order to win the game, you need 4 to 5 international players, international class players. So they can if one fails, other two few perform. Unfortunately, Pakistan they have only one player, which is Babar Azam. That's what they say. He's arguably the best batsman in top batsman in the world. But when he fails, Pakistan is done. So I'm looking forward to tour of Pakistan and South Africa a little bit later, and a few others tour to England. I think England coming, Australia coming too, possibly New Zealand coming too for these tours. And then after that, I'll almost end the year they go in South Africa. If the Pakistan wants to do it again, it's the same thing. In home you can win preparing the deadly wicket, dead wicket. But when you go home, that's where your batsmen make all the dances. Because they make them dance because they hop up, they make them hard wicket and put some grass on the top. This is what the problem is of Pakistan team is. Pakistan cricket board is, Pakistan selection is. And like in Australia tour, you look, last year, New Zealand tour recently, and before that Australia tour, what happened? Nothing. They were terrible. Because the system in back home, in Pakistan is like this. They don't play. First of all, they need to get lots of players, so they can give them training on the side. Give them training on the side, so they prepare them. They need to learn. I'm talking about beside the cricket, beside the politics, and only about the cricket. That they need to do it. They need to get like Indian. Be serious about the cricket. Get the bench stronger. When look at this, Indian on Australia tour, they have a strong bench. The first test match they lost, the second they drew, and the third one they won. That's because they had a strong bench. That's what the Pakistan needs to do. They need to prepare the top class players. Bring it in. Like this guy against South Africa, they brought Mohammad Zahid. Yeah, Zahid Ahmed, sound like them. Mohammad is the right arm leg spinner.
I talked about the guy a few months back that he's a good player. Pakistan needs to bring that guy in. Look, in the 2020, they brought him. He took 3 wickets. Why? Why? Because I played with the top class spinners here. Indian spinners, South African spinners, West Indian spinners, New Zealander spinners, Australian spinners. When you play with these kind of players and you learn, and I played here against a pace batter to quick bowlers too. That's how I can talk about it. Lord is great. Lord puts him in my head and I talk about it. इसलिए मैं इसके बारे में बात करता हूँ. पाकिस्तान को ये करना पड़ेगा. अगर पाकिस्तान ये नहीं करेगा, अच्छे प्लेयर्स को नहीं खिलाएगा, सिलेक्शन में सही रखी नहीं देखेगा, जब भी पाकिस्तान सही सिलेक्ट प्लेयर करेगा पाकिस्तान जीतेगा. बिकॉज अल्लाह का दस्तूर है कि जब आप अच्छा सही हक कल को खिलाएंगे, जो डिजर्व करते उसको खिलाने, पाकिस्तान मैच जीतेगा. तो यही हुआ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस में भी और 2020 मैचेस में भी. वनडे सीरीज तो नहीं थी. जब ये वहाँ पे वापस जाएंगे साउथ अफ्रीका में ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट्स व्हाई इज गोना बी प्रॉब्लम फॉर द पाकिस्तान. दैट्स व्हाई ये उनके कमेंटेटर भी बात कर रहे थे कि यहाँ की तो बात ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान उधर जाएगा वहाँ जाके कैसा मामला होता है, ये पाकिस्तान के लिए ये इंपॉर्टेंट जब वहाँ पे जाके खेलेंगे. इंडिया की देख लें, इंडिया टेस्ट मैच खेल रहा था, वो पहला टेस्ट मैच आ रहे हैं, दूसरा उन्होंने जीत लिया. ऑस्ट्रेलिया में क्या किया उन्होंने, वो पहला टेस्ट मैच आ रहे, दूसरा ड्रू किया और तीसरा उन्होंने जीत लिया. क्योंकि वो प्लेयर्स को रोटेट करते हैं. वो ऐसे नहीं है ये कि कोई प्लेयर अच्छा है वो फेल हो रहा खिलाई तो ना वो फेल होता है, वो किसी और को ले आता है. क्योंकि उनका बेंच बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया का. यही इंपॉर्टेंट चीज़ है इंडिया की टीम के, पाकिस्तान टीम के लिए. पाकिस्तान टीम को मैं सियासत से हट के बात कर रहा हूँ. इनको भी इंडिया से सीखना पड़ेगा कि प्लेयर्स को कैसे खिलाना है. अगर अच्छा प्लेयर ड्रॉ करो, उसको नया बच्चा लेके आओ. नया बच्चा आएगा, वो भूखा होगा, उसको फेम होने के लिए भूखा होगा, वो ज़्यादा मेहनत करेगा, वो हार्ड वर्क करेगा, वो टाइम मारेगा, वो बॉडी के ऊपर बॉल खाएगा वो, क्योंकि उसको पता है कि मेरी यही रोटी पड़ी, मैंने सारी उम्र मेहनत की है, मैं ऐसा खेलूँगा तो मैं टीम में बनूँगा. बच्चे ऐसे आते हैं. अगर नहीं खिलाएंगे आप तो ऐसे ही रहेगा पाकिस्तान में. बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है ये मुझे. मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मैं क्या, मैं रहता हूँ 30 साल हो गए मुझे यहाँ पे रहते हुए. मैं हर टाइप के क्रिकेट खेला, मैं टॉप क्लास के क्रिकेट खेला, टॉप क्लास प्लेयर के साथ. बॉल लग गया मुझे सर में, मेरे बाजू पे, मेरे यहाँ पे लगा. जमैका के अगेंस्ट बहुत दफ़ा और भी प्लेयर्स के साथ, यहाँ पे ट्रायल्स में भी यूएसए के, जहाँ पे जहाँ तेज़ बॉलर आते हैं बॉलिंग करने के लिए. तो ऐसे करना ही पड़ता है. अगर पाकिस्तान ऐसे नहीं करेगा तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी. ये जो चीज़ें पाकिस्तान के वहाँ बैठे हुए हैं प्लेयर, वो को बताते तो है नहीं, वो उनको हल नहीं बताते, वो नहीं बताते. क्योंकि वो बोलेंगे, जो बोलेगा उसकी टांगें उठा देंगे, वो जो बोलेगा उसकी टांगें उठा देंगे वो. इसलिए पाकिस्तान के बहुत से प्लेयर बाहर निकल जाते हैं. इमरान ताहिर कुछ आगे बढ़ चले, मैं भी धिक्के खा के वहाँ से निकला. समझ में नहीं आता. मैं जब स्कूल में खेलता था लाहौर में, मैं बात कर रहा हूँ 81, 83 की, आई थिंक मैं सबसे तेज़ बॉल डालता था पूरे लाहौर के अंदर. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोगों ने कहा है कि पूरे लाहौर के स्कूलों में कोई तुम्हारे जैसा तेज़ बॉलर नहीं है. लेकिन क्या हुआ, ज़रूरत वहाँ पर मुश्किल पड़ती है कि या तुम किसी को जानो, या कोई मिनिस्टर के पुत्र बेटे हो, या कुछ ऐसा इंडिया है, वरना आप छुट्टी का अंदर होते पाकिस्तान. जी बड़ी अफसोस की गल है, बहुत बुरी गल है. इंज नहीं होना चाहिए. इंडिया तो इंज नहीं है. इंडिया अगर टैलेंट है तो तुहानू खिलाणगे. इंडिया का फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज किस तरह है, बेचारे गरीब घर का बच्चा, वो आ गया, देखिए वो खेल रहा, वो इंडिया के लिए टॉप स्टार बन गया वो. हालांकि बेचारे के ऑस्ट्रेलिया टूर के उसका बाप मर गया. मैं सियासत से हट के बात कर रहा हूँ. मैं सियासत की बात नहीं मैं करता, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ. तेरे में ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को. बच्चे को खिलाओ, नए प्लेयर को खिलाओ, चांस दो. जो नहीं खेलता उठा के बाहर मारो उसको. किसकी बाप की टीम नहीं है ये, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टीम है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की टीम है. इसलिए अफसोस होता है जब पाकिस्तान आता है, जब पाकिस्तान जीता है, और हमें खुशी भी होती है पाकिस्तान जीता है. हमारी छाती जो है ना, ये छाती चौड़ी हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान जीता है. जब नहीं जीता, मैं जब ग्राउंड में जाता हूँ, लड़के सारे मजाक उड़ाते हैं, इमरान भाई ये क्या हुआ, ये पाकिस्तान ने क्या किया है, इन्होंने सारा गंद कर दिया पाकिस्तान ने. तो ऐसे दुख होता है ना भी देख के. दैट्स व्हाट इट इज इम्पोर्टेंट. द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीड्स टू अंडरस्टैंड इट दैट इफ यू डोंट गिव द राइट गाय चांस, यू विल नेवर विन. अब इन्होंने मोहम्मद जाहिद अहमद को खिलाया, बच्चे का नाम है, फाइनल एक्स विनर. कितनी अच्छी बॉलिंग की अंडर 2020 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट. ऐसे बच्चे को खिलाओगे तो पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ है. मैं यही कहूँगा. अब देखें अगला नेक्स्ट टूर क्या होता है पाकिस्तान का. अभी तो PSL चल रहा है. PSL में मैंने आज 2 मैच देखे थे, दोनों मैच. और इम्पोर्टेंट प्लेयर चीज़ ये है, पाकिस्तान को डोमेस्टिक प्लेयर को परफॉर्म करना चाहिए PSL के अंदर.
अगर दूसरे परफॉर्म करें उससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा, उससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरे परफॉर्म करेंगे PSL के अंदर पाकिस्तान प्लेयर्स को परफॉर्म करना चाहिए, वहाँ से फ़ायदा होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान की टीम को, वरना कोई फ़ायदा नहीं है PSL कराने का। वहाँ से जैसे इंडियन है वो सीखते हैं सारा कुछ, ये भी फील्डिंग सीखें, बैटिंग सीखें, बॉलिंग सीखें, क्रिकेट कैसे खेलना है वो सीखें, अच्छे बैट्समैन से उसकी टेक्निक सीखें, पाँव कैसे हिलाना है, पाँव कैसे ला के खेलना है, बॉल की लाइन में आना है, बॉल को छोड़ना है, बॉल को लाइन में आके छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। मुझे यहाँ तक यहाँ मैं एक दिन मैं प्रैक्टिस कर रहा था यहाँ पे, वो इंडियन ही प्लेड विद सुनील गावस्कर इन इस टाइम, रोनी रामपुरी, तो मैं बैटिंग कर रहा था, वो वेस्ट इंडीज था, लड़का बड़ा अच्छा बॉल डाल रहा था, वो डाले मैं मिस कर दूँ, वो डाले मैं मिस कर दूँ, वो पीछे खड़ा था वो बंदा, वो मैं उसकी कप्तानी में खेला था टूर के ऊपर बांग्लादेश के, तो उसने मुझे कहा इमरान क्या कर रहे हो, मैंने कहा रोनी भाई ये बॉल मिस हो रहा है, कहता नो स्टांस लो, मैंने स्टांस लिया, उसने स्टांस दिया, मैंने नया स्टांस लिया थोड़ा सा, वही बॉल को मैं शॉट मारा था, उसने कहा बस ये टेक्निक बहुत ज़रूरी है, फुटवर्क आपका बहुत ज़रूरी, फुटवर्क अच्छा नहीं है तो पाकिस्तानी बैट्समैन बैटिंग नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम है। क्विक फास्ट बॉलर को, अच्छे स्पिनर को फुटवर्क चाहिए होता है, अगर नहीं करेंगे तो कैसे होता है, इफ यू डोंट हैव गुड फुटवर्क यू आर नॉट गोना प्ले अगेंस्ट इंटरनेशनल बॉलर्स, गुड क्वालिटी बॉलर, फास्ट बॉलर्स, इट्स टफ फॉर पाकिस्तान। दैट्स व्हाट आई वांट टू से, मैं यही कहूँगा पाकिस्तान के लिए कि आप ये IPL और PSL हो रहा है, अल्लाह करे पाकिस्तान की टीमें, पाकिस्तान के प्लेयर अच्छा करें, वो दूसरे प्लेयर तो आते हैं पैसा लेके जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के प्लेयर्स को लर्न करना पड़ेगा उनसे। This is my answer for Los Angeles, California. Have a good day, bye-bye. Pakistan earlier this year, there were a line of women that were complaining because there's more women that need the sponsorship than we've been able to give. So please tonight, let's take that number up a few more $1,000 to get to the 150,000 inshallah. You're nearly there. Thank you so much. We can auction one more bat if you want. Fill up the forms. I know Los Angeles, chupchap se aap dete ho. So please on your way out, let's make that number up. Yeah, we will do that. Thank you. So I would like to take this opportunity, guys, that's from our side.